Yes, good afternoon, everyone. Please switch on your camera so that we can start the today's class. Yes, so Arshpreet is also requested because otherwise now I will have to use the option to get it removed from the class. Clear? So today we will start with the session with this on AI. So are you able to view the screen? There has never been a better time for artificial. Yes. Sound आ रही है आज? Yes, sir. ठीक है. Yes, Arshpreet, this is the final request to you. If you want to stay in the class, it's fine. Yes, Arshpreet, are you listening? Clear. So the video is there on clear. The video is there on AI. Clear. So just see the video and then we will have a discussion on this video. There has never been a better time for artificial intelligence. With big data, cloud, and seamless connectivity, there has never been a better time for artificial intelligence. With big data, cloud, and seamless connectivity, digital voice assistants, smart robotic devices, real-time navigation, the world is ready to explore the potential of this single largest technology disruptor. From defense, healthcare, agriculture, education, transportation, space. The impact of AI has augmented human capabilities to a massive extent. Artificial intelligence for Atmanirbhar Bharat. Technology opens an entirely new sphere and sector for growth. It also opens an entirely new paradigm of opportunities. Artificial intelligence is all set to contribute and $967 billion to India's economy by 2035. India projects a tremendous potential to be the next big hub for the experimentation, testing, and development of AI technology. Besides the abundance of talent and latest technologies, India has the rich reserve of public data, which together are the growth drivers in AI investments and innovations. For the economy's explosive growth and inclusive social empowerment through AI-assisted healthcare facilities, real-time advisory, smart education, and infrastructure. Welcome to India.
a garage for artificial intelligence powered products and services. AI to unleash its true potential. Tune in to the next 5 days of Global Artificial Intelligence Summit, RAISE 2020. Responsible AI for social empowerment. Yeah, so we have basically seen the video. So first we will have a view from, yes, Indraveer. Indraveer, what you have learned? So yes. Before we start, yes, someone please start your camera first. Yes, Indraveer, whatever you have learned. Sir, in this video, they have basically shown that India is going to become a hub for for testing of artificial intelligence, and in the coming days, artificial intelligence is going to take over in many fields, like space, computer. Yes. ठीक है. Yes, Atul, Mr. Atul will say something on this. जी सर ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ AI तो AI से कोई बिजनेस में एडिशन होगा, हमारे बिजनेस में कोई एडिशन होगा? ਸਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਜੇ ਮੇਨ Amazon ਤੇ Flipkart ਹੀ ਹੈ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਉਂਗੇ. ठीक है, good. Yes, Aman, please, same question to you. What business will be added by the AI, use of AI in the next 10 years? Like if we develop robots or some other things like that, so they can be sold, like house help robots that can work for the house cleaning, cooking and other things by artificial intelligence. ठीक है. वीडियो में आपने एक देखा होगा, बड़ी जबरदस्त फिगर थी. इन दी नेक्स्ट 10 years they are saying that about $930 billion will be added into the Indian economy. ठीक है, that is almost, this is equivalent to $1 trillion. Clear? तो ये बड़ा है कि that means that all area जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग है और जितने भी एग्रीकल्चर है, हेल्थ केयर है, हर जगह AI का यूज होगा इन दी नेक्स्ट 10 years. That's why अगर आप लोगों को पता होगा कि अब CBSE ने किया है, वो 7th 8th से ही उन्होंने AI इंट्रोड्यूस कर दी है. ठीक है. एक आप लोगों ने एक आजकल फेसबुक के ऊपर बहुत ऐड आती है किसी कंपनी की. कौन सी कंपनी है जिसकी ये IPL में भी बहुत ऐड आती है, उसमें बोला जाता है स्टार्ट अर्ली कोडिंग. वो शिखर धवन के बेटे की देखी है, शिखर धवन जिस ऐड में आता है, कौन सी कंपनी की ऐड है वो? White hat. यस. तो उनका मेन लोगो क्या है, उनका व्हाट दे वांट टू से, वो बताना क्या चाहते हैं उसमें? कोडिंग स्टार्ट करनी है अर्ली, जिसमें यस स्टार्ट उनका मेन मोटो है, स्टार्ट कोडिंग अर्ली. ठीक है. तो उनका मतलब ये है कि ग्रेजुएशन के बाद कोडिंग स्टार्ट नहीं करनी, स्टार्ट कोडिंग अर्ली. जितनी बच्चा जल्दी कोडिंग की हैबिट डालेगा, so the chances that he will he can do the great jobs in the days to come. Clear? तो बेसिकली वो कोडिंग की हैबिट को एज अर्ली इनकलकेट करना चाहते हैं. ठीक है. बेसिकली तो वो उनका मार्केटिंग लोगो है. क्लियर? सो आई विल शो यू दी वीडियो अगेन. तो थोड़ा सा आप you look at now from the business angle, what sort of the business will be generated by this one. There has never been a better time for artificial intelligence. With big data, cloud, and seamless connectivity, digital voice assistants, smart robotic devices, real-time navigation, the world is ready to explore the potential of this single largest technology disruptor. From defense, healthcare, agriculture, education, transportation, space,
The impact of AI has augmented human capabilities to a massive extent. Artificial intelligence for Atmanirbhar Bharat. Technology opens an entirely new sphere and sector for growth. It also opens an entirely new paradigm of opportunities. Artificial intelligence is all set to contribute an $967 billion to India's economy by 2035. India projects a tremendous potential to be the next big hub for the experimentation, testing, and development. So next we will इस वीडियो के अंदर आपने कोई टेक्नोलॉजीज के ऊपर डिस्कशन हुआ, दैट इज अदर देन एआई, कौन सी और टेक्नोलॉजी थी जो वीडियो में डिस्कस की गई हो? वीडियो के शुरू में ही जो एम्फोसिस दिया है वो दो कीवर्ड यूज किए हैं उन्होंने, एक बिग डाटा का यूज किया है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज किया है. सो एनीवन हु विल से बिट ऑन बिग डाटा, व्हाट इज बिग डाटा, क्या होता है बिग डाटा? नाम सुना है बिग डाटा का? बिग डाटा में वी मेक द यूज ऑफ 4 V's का कंसेप्ट यूज होता है. 4 V's दैट इज, एक तो होता है उसके अंदर वैरायटी ऑफ डाटा, वेलोसिटी ऑफ डाटा, और ठीक है, मींस जैसे जिसके अंदर बिग डाटा के अंदर क्या होता है, जैसे एग्जांपल है, जैसे हम फेसबुक के ऊपर काम कर रहे हैं, ट्विटर के ऊपर काम कर रहे हैं, अमेज़न के ऊपर जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो वहां से क्या हो रहा है, दैट इज बेसिकली दिस इज हाउ द बिग डाटा इज जनरेटेड. क्लियर? जिसमें दैट इज द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा दैट इज बीइंग जनरेटेड नाउअडेज, जिसके अंदर क्या है कि डाटा इज वर्साटाइल आल्सो. वर्साटाइल का मीनिंग क्या होता है? डाटा इज वर्साटाइल, दैट इज डाटा के अंदर क्या आ जाएगा, 3 तरह का डाटा होता है हमारे पास, दैट इज वन इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, स्ट्रक्चर्ड डाटा एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा. कोई एग्जांपल दे सकता है कि आप लोगों में से इसमें से स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है? फर्स्ट वी डिस्कस दी स्ट्रक्चर्ड डाटा. यस, एनीवन? और डाटाबेस में हम यूज करते हैं, ये टेबल्स के फॉर्म में डाटा यूज करते हैं. ठीक है, जैसे इसके अंदर हम यूज करते हैं, स्टूडेंट टेबल का यूज करते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट टेबल में क्या होता है हमारे पास? यस, एनीवन? म्यूट कर लो बेटा, म्यूट. स्टूडेंट डाटा में होता है हमारे पास, वन इज जैसे स्टूडेंट की आईडी है, ठीक है, नेम है, और लेट्स से थर्ड कॉलम हम ले लेते हैं, दैट इज द सिटी ऑफ द स्टूडेंट. तो इसमें क्या होता है, हमें सबसे पहले डाटा के बारे में हर चीज पता होती है. ठीक है, कि डाटा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, आईडी में उसका रोल नंबर पड़ा हुआ है, और नेम में उसका किस तरह का नेम पड़ा हुआ है, सिटी में किस तरह की वैल्यूज आएंगी. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर्ड डाटा. अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की कोई एग्जांपल आपके पास हो? अनस्ट्रक्चर्ड जैसे कोई भी डाटा जो किसी भी फॉर्मेट के अंदर नहीं है. ठीक है, जैसे आपके पास कोई बुक है, बुक का डाटा पड़ा हुआ है, कुछ भी ऐसा है, जैसे हम फेसबुक के ऊपर चैटिंग कर रहे हैं, क्लियर, ट्विटर के ऊपर कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं, सो दैट इज नॉट बेसिकली स्ट्रक्चर्ड डाटा. क्लियर? और सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है जो ना तो स्ट्रक्चर्ड होता है, ना हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड होता है, इन बिटवीन जो डाटा है, दैट इज जैसे ईमेल है हमारी, सो दैट सॉर्ट ऑफ डाटा इज कॉल्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड. तो बिग डाटा के अंदर क्या आता है, एक तो होता है हमारे पास वैरायटी ऑफ डाटा, मैंने आपको एग्जांपल देती है, 3 तरह का डाटा हो गया हमारे पास, सेमी स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा. ठीक है, और एक इसमें पॉइंट होता है वेलोसिटी. वेलोसिटी मींस कि जो डाटा जनरेट होता है बिग डाटा में, दैट इज एट ए वेरी रैपिड रेट. आप देखते हो कि फेसबुक के अंदर कितना डाटा जनरेट हो रहा है, कितनी जो फोटोग्राफ्स डाल रहे हैं,
और अपनी पोस्ट डाली जा रहे हैं, सो दैट इज जनरेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। तो एक तो इसके अंदर ये टर्म यूज की हुई थी, दूसरी टर्म इसके अंदर यूज की हुई थी क्लाउड कंप्यूटिंग। सो एनीवन कैन गिव द एग्जांपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? कोई क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बता सकता है? एनीवन? सुना है नाम क्लाउड कंप्यूटिंग का? यस, सो से समथिंग ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग। आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत ज्यादा रोल है। जब भी आप किसी कंपनी में अगर आप काम करने जाओगे तो क्लाउड, आजकल सारी टेक्नोलॉजी क्लाउड बेस्ड ही आ रही है, मोस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज। तो कोई एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग की, कोई एग्जांपल है? ये जो आप गूगल ड्राइव यूज कर रहे हो, बेसिकली क्लाउड कम हाँ, ये जो आप गूगल एंड ड्राइव, एप्पल हाँ हाँ, भी होता है। जैसे हम मीन्स जो भी हमारा डाटा जो है बेसिकली वो थ्रू इंटरनेट, अगर हम किसी भी स्टोरेज के ऊपर डाटा डाल रहे हैं, और हम डाटा ही नहीं यूज कर सकते, वहां से सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखो कि जो है जीमेल के अंदर हमारे पास क्या है, गूगल शीट भी हम यूज कर रहे हैं, गूगल डॉक्यूमेंट भी हम यूज कर रहे हैं। क्लियर? सो वी आर यूजिंग बेसिकली नाउ दी मल्टीपल टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। और इसके अंदर हम हार्डवेयर भी इन द डेज टू कम वी कैन मेक यूज ऑफ हार्डवेयर आल्सो। क्लियर? तो बेसिकली क्लाउड के अंदर क्या है, दैट इज वी आर मेकिंग यूज ऑफ सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एज वेल एज स्टोरेज सर्विसेज, वी आर मेकिंग यूज ऑफ क्लाउड। क्लियर? जैसे द बेस्ट एग्जांपल इज जो गूगल ड्राइव के अंदर हम यूज कर रहे हैं, और गूगल ड्राइव के अंदर देखो आप, गूगल ड्राइव है और जीमेल के अंदर कितने टूल्स हैं विच यू आर गेटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नाउडेज। जैसे गूगल क्लासरूम है, तो गूगल क्लासरूम भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, ठीक है। गूगल क्लासरूम में क्या कर सकते हैं हम, व्हाट वी कैन डू इन द गूगल क्लासरूम? assignments and work for the share that is just to classroom हमें भी शायद पढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, यस, अदर देन यस, इंद्रवीर? इंद्रवीर ने मेरे को लगता है क्लास नहीं ज्वाइन की हुई है ये। यस यस, अमनप्रीत, व्हाट वी डू विद द गूगल क्लासरूम? Sir, we can submit homework and teachers can give homework and we can give tests also. यस यस, And there are असाइनमेंट्स हैं, टेस्ट हैं, ठीक है। और scheduled classes also. जैसे आपके टीचर है वो आपके साथ नोट्स भी शेयर कर सकते हैं, जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, कोई शेयर करना है एज ए नोट्स, सो अ लॉट ऑफ यूजेस। और गूगल क्लासरूम के अंदर हम क्लास भी लगा सकते हैं। गूगल क्लासरूम के अंदर वो गूगल मीट वाला ऑप्शन भी है, सो यू कैन अटेंड ए लाइव क्लास लाइक दिस। जैसे हम जूम पे क्लास ले रहे हैं, वैसे गूगल क्लासरूम के अंदर गूगल मीट भी अवेलेबल है, वी कैन हैव दैट क्लास आल्सो, ठीक है। एक हमने थोड़े दिन पहले एक हमने शेयर की थी एक वीडियो, सो उसके अंदर ऑडियो अवेलेबल नहीं था, दैट इज अगेन द वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो वी हैव सीन फ्यू डेज बैक, सो आई वुड लाइक टू शेयर दैट वीडियो विद यू। So soon we will have the video. The internet is great. We use it daily to read blogs, news, watch videos. Yes, audio आ रही है इसमें? Yes, sir. Okay, then see this video carefully. Now we also surf the net with tablets or even with smartphones, checking Twitter as we wait for the next train.
This is amazing. We are connected permanently. But, and there is always a but, we are more exposed to threats and dangers than ever. Viruses, worms, data thieves, and crackers are just some examples. The question is, how can we protect ourselves against these threats? Total security is impossible, we know that. But if we learn some basics about computer security, we can protect ourselves better from possible attacks. Let's see the main 4 principles of computer security that help us to be safer. First principle, protect information integrity. Before explaining this concept, let's see a story about George and Joanne. Joanne is checking her email since she is expecting a message from George, her boyfriend. When she opens it up, she finds something she really didn't expect. Why on earth did she receive such a message? Let's see what really happened. George is totally in love with Joanne. Suddenly, he's inspired to write her a message. George sends his email, but how unlucky, his message is intercepted by a cracker. The cracker is very bored and decides to modify George's message before resending it to Joanne. And you already know the rest of the story. Joanne doesn't know that the message has been modified by another person, and she is very angry and wants to split up with George. This is an example of data integrity alteration. The modified information can be a text, an image as the one you see in your screen, a file. If you receive this image, you think that it is the same one that the sender attached. But it could happen that the sender attached this image, but you received this one. You'll probably think that this is the original image that was sent to you. When somebody modifies data without authorization or permission, we say that the data integrity has been altered, either because of some modification or because of some deletion. A possible solution for George and Joanne consists of using an email client such as Thunderbird instead of using a webmail interface. This way, George could digitally sign his messages. This is something similar to seal an envelope with wax. If you send your message and somebody who is not authorized opens it, the receiver will notice that the message was read and might have been altered. The second principle of computer security is guarantee data confidentiality. Before explaining its meaning, we'll first see another story. George convinces Joanne not to split up with him. He goes to visit her and brings her a surprise. He wanted to send it by email, but after all the fuss about the email incident, he prefers to go in person. But George has a bad day and he loses his pen drive. After a while, a man sees it and picks it up. He goes home and once there, let's see what we have here. Okay, which one of these folders would you check first? Exactly, the photos folder, which is what the man chooses. He finds out a photo session of George as a special gift for Joanne. The man can't help laughing about this funny situation. Well, funny for him, but not for George or Joanne, the only ones that had to see these pictures. Let's talk now about confidentiality. In a communication, the sender sends a message to the receiver through a channel. That message could be intercepted by a third person. But if the sender encrypts the message, the interceptor will get a text with no meaning and almost impossible to decode. That is confidentiality, when only authorized people have access to private data. And encryption is one of the widest methods used to assure this privacy. In our case, the solution is so simple as using software to encrypt and decrypt the information. TrueCrypt is a free open-source disk encryption software for Windows, Mac, and Linux that allows easily to protect your data. The third principle of computer security is assure resources availability. And these resources can be hardware, such as hard disk, or software, such as files, folders, or applications. Suppose that we have a web server with an online store working 24 hours a day, 7 days a week.
Everything is going well, and the company is earning money and customers are satisfied. Until one day, the server's hard disk fails and the online store stops working. Suddenly, a resource isn't available. Suddenly, customers can't buy and start complaining, and the company loses money and credibility. This is something similar to when you are hungry and want some cookies. You look for the jar of cookies, and there are always cookies. And if you run out of cookies, then your mother appears with more cookies to fill the jar and your belly. That is availability. You have cookies whenever you want them. In computer security, availability refers to the fact of having access to your resources whenever you need them. Again, the solution is rather simple. Instead of using So we have seen couple of stories. Clear? So ये सारी stories उसने जो है that is he has related with the computer security. ठीक है? जैसे जो लास्ट वाला फीचर था दैट वाज दी अवेलेबिलिटी. जैसे कोई कंपनी है तो वो अपनी सर्विसेज जो है वो अपने जैसे ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, और लेट्स से कि जहां पे उसकी वेबसाइट स्टोर्ड है वो हार्ड डिस्क खराब हो जाती है, तो अगर वो हार्ड डिस्क एक ही अगर आपने हार्ड डिस्क लगाई हुई है तो डेफिनेटली वो आपकी वेबसाइट क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बिकॉज दैट वेबसाइट इज स्टोर्ड ऑन दैट वेरी हार्ड डिस्क. तो इसका सोल्यूशन क्या है कि जो रेड टेक्नोलॉजी है, रेड टेक्नोलॉजी क्या बोलती है कि हम एक की जगह दो हार्ड डिस्क का यूज करेंगे. तो उसका क्या बेनिफिट है कि जब भी एक हार्ड डिस्क क्रैश होगी तो उसका लोड जो है वो दूसरी हार्ड डिस्क के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा. सो दिस बेसिकली इससे क्या होता है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी रहती है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी रहती है. जैसे उसने उसकी एग्जांपल रिलेट की है कि जैसे आपके घर पे बिस्किट है, तो अगर आपके पास घर के पास आपके घर में एक बिस्किट का पैकेट खत्म होने वाला है, तो मदर्स और फादर क्या करते हैं, वो आपके लिए और बिस्किट के पैकेट रखे होते हैं उन्होंने, सो दैट कि अगर एक बिस्किट का पैकेट खत्म हो जाए तो उसका जो बच्चा है ही कैन यूज दी अनदर पैक ऑफ बिस्किट्स. सो दैट इज बेसिकली इसकी जो मेन रीजन है, दैट इज दी रिसोर्स अवेलेबिलिटी. तो दीज आर दी ऑल टॉपिक्स विच आर रिलेटेड विद कंप्यूटर सिक्योरिटी. क्लियर? तो आज जो है हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी हैव टेकन अप विद द हेल्प ऑफ वीडियोस. तो एक तो ये है कि आज हमारी क्लास भी थोड़ी डिलेड स्टार्ट हुई है, सो वी हैव स्टार्टेड एट 2 o'clock. क्लियर? सो ड्यू टू सम मीटिंग आई हैव टू डिले दिस क्लास. और नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द थर्ड प्रोग्राम. कोई प्रोग्राम की लिस्ट देखता है आप लोगों में से? जो हमारे प्रैक्टिकल के प्रोग्राम है उसकी लिस्ट कोई देखता है कि यहाँ वो मेरा ही टास्क है कि मैंने ही वो प्रोग्राम देखना है? आई थिंक नो वन लुक्स एट दैट वेरी लिस्ट. ठीक है? तो जो थर्ड प्रोग्राम है वो आप लोग जितने अटेंड कर रहे हो क्लास, वो कल देख के आना है आप लोगों ने. आप लोगों से बनवाऊंगा मैं प्रोग्राम. मेरे को लगता है या तो आप लोग कल भाग जाओगे क्लास से और यहाँ पढ़ के आओगे. ठीक है? तो जो प्रोग्राम की लिस्ट है उसमें थर्ड प्रोग्राम बेटा देख के आना, एंड वी विल डिस्कस दैट प्रोग्राम, एंड प्लस जो थ्योरी वाला हमारा आईपीआर वाला टॉपिक है उसको आगे प्रोसीड करेंगे. स्टिल एट द एंड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, सो यू कैन रेज दैट क्वेश्चन. ठीक है? और मेरे को लगता है कि ये लंच सेशन के बाद थोड़ी सी वीडियो का यूज करना चाहिए, क्योंकि वीडियो से बंदा थोड़ा अलर्ट रह जाता है. अदरवाइज बहुत ज्यादा अगर हम थ्योरी बोलेंगे तो उससे अच्छा है कि थोड़ा वीडियो का भी यूज होना चाहिए बीच बीच में. यस, एनी फीडबैक? यस इंद्रवीर, यूज करनी चाहिए वीडियो या नहीं करनी चाहिए लेक्चर में? सर करनी चाहिए, क्योंकि ना अभी जैसे लंच का टाइम हो रहा है तो फिर काफी नींद सी आ रही होती है. फिर जैसे आज वीडियोस थी ना, एक्चुअली तो फिर क्लास में इंटरेस्ट बना रहा. एक्चुअली पता क्या है, अगर हम सारा टाइम लेक्चर मोड में पढ़ेंगे ना तो हमें अपनी टीचिंग इंटरेस्टिंग ही नहीं लगेगी. ठीक है? अगर बीच बीच में 1 मिनट की 2 मिनट की वीडियो है तो बंदा थोड़ा रिलेट करता है कि जो हम एआई की वीडियो देख रहे हैं ऐसा रियल लाइफ में कहीं होता होगा. तो अगर मैं यहाँ से बोलता जाऊँ एआई है, आप बोलोगे पता नहीं सर कौन सी एआई की बात कर रहे हैं. तो किसी चीज को रिलेट करवाने के लिए वीडियो इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल.
सो ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि इस क्लास में दैट इज वी शुड यूज दी वीडियोस नॉट आप देखो ये बाइजू वगैरह की आप ऐड देखते हो जो टीवी पे आती है, तो वो क्या करवाते हैं दैट इज दे आर सेइंग कि वो अगर हम टीचिंग वाले मोड में टीचिंग ऐसे लेक्चर वाले मोड में बैठे रहेंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे, सो दे विल नॉट बी बेसिकली एबल टू अंडरस्टैंड इन ए बेटर। ठीक है, तो आप भी अगर आप लोगों के पास कोई हेल्पफुल आइडिया आता है क्लियर एंड यू हैव सम वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो है दैट you want that the whole of the class should share, ये नहीं है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट रिसोर्स है 2-3-4 मिनट की वीडियो है दैट यू फाइंड दैट कि आपके फ्रेंड्स जो हैं दैट इज नो, ये नहीं है कि दैट इज रिसोर्सेज तो अब सभी के लिए है। ये जो मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया ये लिंक्डइन पे मैंने वीडियो देखी, तो ये बेसिकली टॉपिक मैं +1 वालों को पढ़ा रहा था, तो +1 वालों को मैं लाइव क्लासेस में पढ़ाता हूँ, वहां तो मैं वीडियो दिखा नहीं पाया उनको, तो उनके लिए मैं अलग से सेशन अरेंज करूंगा, तो वहां पे मैं उनको वीडियो दिखाऊंगा ये। तो ये है कि हमें वी शुड बेसिकली शेयर द रिसोर्सेज। अगर आपके पास कोई वाइटल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो यू शुड ब्रिंग दैट टॉपिक एंड इंफॉर्मेशन टू द क्लास। एट द एंड any point you want to discuss, or I should finish the class? Yes, so I think it is the time to say thank you. Thank you beta. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you.